Hello and a very warm welcome to the Question Hour show, your show where we bring you important unstart questions asked by the members of the upper house and the response given by the government in written format. I'm Kriti Mishra and joining me on the show is my colleague Rajat Kain. Thanks Kriti. Let's take our viewers to the question asked by the Member of Parliament from the government. Let's commence the Question Hour show. And the first question that we've picked up in this edition is from member Kanta Kardam, and this one pertains to the Ministry of Social Justice and Empowerment. And the member has asked the government whether it has issued any guidelines for proper implementation of various ongoing schemes for the welfare of scheduled castes. Well, in the reply, the government said all the schemes of Ministry of Social Justice and Empowerment have guidelines for proper implementation, and implementing agencies are required to comply with the guidelines. Continuing with the reply, the government said regular monitoring of these schemes is being done through progress reports, meetings, conferences, video conferencing and regular field visits. Proposals are scrutinized by multidisciplinary state-level grant-in-aid committee and submission of utilization certificate duly verified by chartered accountants. In fact, Rajat, Mrs. Kanta Kardam joined us on the Question Hour show, and this is what she had to say on government's response. आपने बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि किस तरह से जो वेलफेयर स्कीम्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए उनका रिव्यू कैसे हो रहा है, मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है, किस तरह से देखती हैं आप सरकार के जवाब को? देखिए, सरकार अनुसूचित जाति दलितों के लिए बहुत कुछ कर रही है। कभी ध्यान नहीं दिया गया, पिछली भी सरकारें रहीं, कभी इस तरह से ध्यान नहीं दिया गया। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में अब लेंगे, काम तो दोनों तरफ हो रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र में भी। शिक्षा की तरफ अपने प्राइमरी स्कूल हैं, एक तो जो जर्जर बिल्डिंगें हो रही थी, एक तो उनको सबको ठीक कराने का काम अभी चल रहा है, और जो भी वहाँ सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट है, अपना पीने जल की जो समस्या थी वो, कि अच्छा पौष्टिक आहार भी मिले, उस तरफ है। और फिर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ फ्री जो उन्होंने किताब और फुल ड्रेस, अब ड्रेस के साथ में जूता जुराबे पूरा फुल यूनिफॉर्म देने का काम भी किया है। और दूसरी है कि जो बच्चे बाहर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इंटर के बाद भी, चाहे वो विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे यहाँ हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी लोन की सुविधा हमारी सरकार ने करा रखी है, और बहुत आसानी से उन्हें लोन उपलब्ध हो सकता है, कोई इसमें संदेह नहीं है। और जो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मिलती है वो लगातार समय पर मिल रही है, और हर तरह की सुविधा पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं। बेटियों के लिए कि बेटी आगे बढ़ें, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को आगे बढ़ाना भी है। तो जो लड़कियां नहीं पढ़ती थीं, आज भी ये सब सुविधाओं को देखते हुए लड़की आगे आई हैं, परिवार भी आगे आए हैं और लड़कियों को शिक्षा दिला रहे हैं। आज पूरे देश भर में कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां गरीब लोगों के लिए, जिनको ज़रूरत थी, सबके घरों में शौचालय बनवाने का काम नहीं किया है। 8 करोड़ पूरे देश में गैस चूल्हा उन्होंने दिया है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि रोटी के लिए भी, अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं जुटा पाते हैं जिससे कि ये सब चीज़ें ले सकें। तो गैस का कनेक्शन की बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाने से जो धुआं जो निकलता है उससे कई तरह की बीमारियां होती थी। टीबी की बीमारी, आँखों की रोशनी कम हो जाना, दमे की बीमारी, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ। तो उसको धुएं से छुटकारा मिले, उसके लिए ये कदम उठाया कि उज्ज्वला योजना से जो फ्री गैस कनेक्शन है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना जो देने का जो काम किया है, आज जो है कि हर गांव में, चाहे अभी बहुत दिनों से शुरुआत कर रखी है और बहुत से परिवारों को हैंडओवर भी कर दिया गया है मकान जो है। मैं अभी चुनाव में जब मैं गई थी, लखीमपुर खीरी, भदोही में मैं गई, बहुत सारी जगह, लखनऊ में मैं गई थी, और अपने यहाँ भी मैंने देखा कि गांव में बहुत अच्छा सुंदर मकान बना के दिए हैं, पक्के बढ़िया मजबूत बना के दिए। एरिया भी ठीक है वहाँ। तो जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं
और वहाँ गंदगी भी है, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, क्योंकि ऐसा फूस का मकान बना हुआ है, नहीं है उनके पास में पैसा, नहीं कर सकते हैं वो, तो पक्का मकान जो बनाने का जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री ने, वो जो है आज जो है वो गरीब लोगों को मकान भी पक्के मतलब काफ़ी मिले हैं, और मकान ही नहीं मिले हैं, शिक्षा भी मिली है, साथ के साथ गरीब बच्चों को उज्ज्वला योजना मिला, फ्री गैस कनेक्शन, फ्री जो है बिजली का कनेक्शन भी उस घर में दिया है, और LED बल्ब भी उनको दिया है, वहाँ से दिया है। तो ऐसी बहुत सारी, आंगनवाड़ी को भी आपने देखा होगा कि वो भी बहुत गरीब परिवार की, मध्य परिवार की महिलाएं यहाँ होती हैं। आज भी सवाल ये आ रहा था, उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है, और उनके माध्यम से भी वो दलित परिवार में जाती हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो नहीं पैसा खर्च करते, बहुत से को जानकारी भी नहीं होती है, तो वहाँ जाके उन परिवारों को वो ठीक तरह से उनकी देख रेख करें, और जो भी उन्हें ज़रूरत है वो उसको मुहैया कराएं। टीका लगाने की है, उनको पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए भी सुविधा करी है कि उनके खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपये जाते हैं उनको डिलीवरी। तो उनको जो सुविधा चाहिए प्रेग्नेंट महिला को, वो सब वो 6,000 रुपये में वो हो जाता। इस तरह तो दलितों के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं कि अपार हैं। आयुष्मान भारत के तहत जो वो गरीबों को ही देखे ज़रूरत पड़ेगी, 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर छोटी मोटी बीमारी के लिए भी सोचना पड़ता है उन्हें कि हम लोग जो है डॉक्टरों की फीस देखिए, और गंभीर बीमारियां हो जाए तो क्या है कि या तो अपना घर मकान बेचेगा इंसान, या फिर ब्याज पे पैसा लेगा। 5 लाख रुपए आयुष्मान के तहत जो कार्ड बनाकर उन्होंने दिए हैं, ये बहुत बड़ी राहत है। और इसमें कौन है, दलित वर्ग के लोग हैं जो है, तो बहुत लोगों को कार्ड दिए हैं, और बहुत से ने अपने इलाज भी करा रहे हैं, और बहुत राहत मिली है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर बताने लगे तो काफ़ी सारी, सैकड़ों योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग दे रही है, तो हर तरह की योजना है। और सामूहिक विवाह, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, उत्तर प्रदेश में अभी क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक विवाह जो है कराने का काम किया है, और सामूहिक 100-150 महिलाएं, मतलब बालिकाएं एक साथ शादियाँ होती हैं वहाँ। तो जो लोग नहीं कर सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं है, ऐसे परिवार को ये बहुत बड़ी राहत है कि वहाँ शादियाँ कराने का सामूहिक जो है सरकार करा रही है। उत्तर प्रदेश की क्या, पूरे देश भर में ये सब चल रहा, हर स्टेट में चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है, और दलितों के बारे में बहुत सोच रही है। Well, moving on to next question that was asked by Dr. Vikas Mahatme from Ministry of Tourism. He sought to know if the government has proposed to develop cruise tourism in the country. Well, Rajat, this is a very interesting question asked by the member, and in fact, in the answer, the government says yes, which is in affirmative, and the government goes on to say that the Ministry of Tourism has recognized cruise tourism as a niche tourism sector and a product in order to promote India as a 365 days destination and attract tourists with specific interests. The steps taken to promote cruise tourism include developing appropriate infrastructure at ports for handling cruise vessels and facilitating easy movement of passengers. Further, Ministry of Shipping has brought out a vision document with a view to develop India as a cruise shipping destination. The government further goes on to say that the vision document envisaged to develop supporting infrastructure for cruise tourism at ports gives special focus on developing the domestic cruise industry through policy initiatives, support, incentives and port infrastructure development. Separately, Ministry of Shipping and Ministry of Tourism have jointly appointed a consultant for preparation of action plan for development of cruise tourism in India. Let's move on to the next question that has been asked by member PL Punya, and this one pertains to the Ministry of Power. And Mr. Punya has asked the government about number of households to which new electricity connections have been given under the Aspirational Districts program. Well, in a rather elaborate reply, the government said, as reported by states, 68,66,708 households in 117 aspirational districts as identified by Niti Aayog were electrified up to 31st March 2019 since launch of Saubhagya, and all inhabited
unelectrified census villages across the country stand electrified as on 28 April 2018. Electricity is a concurrent subject, and as such providing electricity connection falls under purview of state governments and power utility. Advisories have been issued from time to time to all states for electrification of public places like Anganwadi centers, schools, health centers, community centers, among others, in their state as per extant state rules. All states and UTs are entered into Memorandum of Understanding with Government of India for providing 24/7, that's been round-the-clock power supply to all households, industrial and commercial consumers from April 2019, and adequate supply of power to agricultural consumers as per state policies. Now moving on to next question that was asked by the member KTS Tulsi, and he sought to know from the Ministry of Health and Family Welfare whether government aims to build and develop public health infrastructure by providing Ayushman Bharat health insurance scheme. Well, again, the government has given a very specific reply to this question, and the government goes on to say that Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, aims to provide health cover of up to 5 lakh rupees per family per annum to the poor and vulnerable section of population by impaneling both public as well as private hospitals. And as on 25th of November 2019, the total number of hospitals impaneled under the scheme stands at 19,668. The government further says that the funds released to public hospitals for treatment under the scheme to the beneficiaries can be used by these hospitals for development of infrastructure as the guidelines are applicable. Let's move on to the last question of this edition of Question Hour, which has been asked by member Benoy Viswam, and this one pertains to the Ministry of Finance. And Mr. Viswam has asked about fugitive economic offenders who've left the country illegally. Well, a rather important question, and the reply government said Central Board of Indirect Taxes and Customs, that is CBIC, has reported about 6 fugitive economic offenders to have left the country illegally. Directorate of Enforcement, that is ED, has filed application against 10 individuals in the competent court under Fugitive Economic Offenders Act 2018, and Central Board of Investigation, that is CBI, has reported that as on date 51 absconders or proclaimed offenders in 66 cases are known to have left to other countries. As reported by Department of Financial Services, the expected loss on stressed loans not provided earlier under flexibility given to restructured loans were reclassified as NPAs and provided for. Public sector banks initiated cleaning up by recognized NPAs and provided for expected losses. Enforcement Directorate and the CBI have filed applications in respect of these cases in competent courts, and proceedings are either under investigation or the matter is under trial. Further, CBI has reported that total amount defrauded by accused person in aforementioned 66 cases stands to rupees 17,947.11 crore. That amount is in approximation. And further in the reply, the government said that CBIC had sent 2 extradition requests to Ministry of External Affairs in July 2019. So Rajat, these were the important questions and answers in this edition of Question Hour. But on the other side, we'll have Prashn Kal in Hindi with our colleagues Arvind Singh and Kriti Singh. Don't go anywhere.